Hello everyone, welcome to prepguruu, the online platform for CUET, right? Today I'm going to start your reading comprehension section in which you have to pay attention. Why? Because in terms of reading and in terms of comprehending and in terms of answering the questions, you have to be attentive. Suppose if I talk about the unseen passage, which we are learning or doing in your school days, those were easy. Why? Because those were including the direct question. Direct question means what? Which can be answered directly from the given passage. But here you will get inference based question also, means you have to think beyond the given statements, and this is important, right? So how to tackle questions within the pre-decided time, what should be the time management, what are the key areas which should be focused, let's discuss, right? So let's begin. Suppose if I talk about reading comprehension. So reading comprehension is what? It is basically a conversation between the reader and the text. See, do you know the process of communication? The process of communication required at least two persons. One should be the sender and the other person should be the receiver, right? Suppose sender sends a message and receiver receives it. If receiver is not able to decode the language of the sender, then the communication process is what? Incomplete. In the same manner, the author is what? The author who has written the passage is what? He is the sender. He is the sender. And the reader who is reading the passage, means the aspirants of CUET who is reading the passage are what? The receiver. If they are not able to comprehend the written passage correctly, means if they are not able to understand or decode the feelings of the author, then the conversation is incomplete. Then you will be not be able to do the answers correctly. So you have to focus on those elements which are important in terms of answering the questions. See, there are two things. One is what? Reading the passage carefully and comprehending it, right? The other thing is what? Do the right questions, means to do the right questions. So which is important? To get marks in RC or to get the comprehension messages, or you can say, or to infer the passages. See, there are so many students who infer the passage correctly, but they are unable to answer the questions correctly. Why? Because they are unable to understand the demand of the question. The demand of the question. This is very important. Suppose if I talk about the questions category, so there are various categories of questions. Okay, I will discuss those. But before starting, there are some important elements which I call approach. Approach to improve your English, approach to improve your reading part, right? What are the things? Let's see. Suppose why we are reading passages, why we are reading passages and why we are doing these kind of exercises, right? Can you tell me? Can you guess why we are reading comprehension, or you can say why we are doing this kind of thing? In terms of what? In terms of answering the passages. Why would you do this? Say this. Suppose if we see, it will improve what? It will improve your verbal ability skills. Verbal ability skills means what? Your verbal ability skills will be improved, means you will be able to understand the given passage, or you can say you will be able to understand the standard English, right? This is required in your practical life, practical career, right? The second thing is what? You will improve logical abilities. See, I was saying that you have to think beyond the given statements. Now, what does it mean? It means you have to improve your logical abilities. If a person is saying anything to you, what is the logic behind that statement? You have to think that, right? If you are in the habit of doing that, then in practical life, you will be what? You will be called as an intelligent person and nobody can fool you, right? Now, the next thing is what? Searching abilities. When you are searching the answers of synonym, or you can say when you are searching the keywords in the passage, your searching abilities will be improved, right? The next thing is what? Knowledge on various topics. This is very important. Suppose if I talk about you are going to deal in reading comprehension part, means reading comprehension part. If you are going to deal in reading comprehension part, folks on, yes, folks on the chat, am I audible to you?
Say yes or no. Type yes or no. Am I audible too? Okay, Kurangi. Now, if I say knowledge on various topics means what? Suppose if any student is reading the English paragraphs, or you can say reading the stuffs in English of economic area, right? Then if he gets the passage from fiction or politics or psychological paragraph or philosophy based paragraph, then what? He might not be aware with the terms and some abbreviations. Nowadays what happens is, author writes any paragraph on social issues and he just write the abbreviations, means short form ही लिख देता है. And if any students or aspirant is unaware with that abbreviation, so he or she cannot tackle the passage easily. Why? Because he is not aware of that. See, if I talk about your reading comprehension, this section requires what? Your GA. GA means general awareness part. Your general awareness part should be improved. Suppose the author is writing PM KVY in his passage, and he is not even giving full form of it, and he is discussing the effects and the drawbacks of PM KVY on society. So can you guess what is the full form, or you can say what is it? PM KVY. Suppose if any student doesn't know the full form of it, then the passage would be difficult for that aspirant. So English को blame इसमें आप नहीं कर सकते. Why? Because you are not socially aware. The problem is not of word, or you can say the problem is not of comprehending the passage. The problem is what? The abbreviation or the short forms, or you can say the social issues. Can you guess anyone from you? Means Kurangi, Kumkum, Keshav, Gauri. Can you guess what could be the full form of PM KVY? Because the author is not going to write the full form of it. He will only use the term GST. He will only use the term TDS. He will only use the term what? PMAY. Now what does it mean? So to improve your general awareness, you have to read newspapers also, and the cases which I will show you, or you can say I will go through various categories of paragraphs. Means I will tell you the passages, or you can say I will show you the passage from political area also, philosophical area also, psychology area also, right? So in terms of improving your knowledge on various topics, this is required, because RC कहीं से भी आ सकता है. In your examination, RC can be from political area also, or fictional area also, or any other area. Let me tell you the full form. PMKVY means what? Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana, right? It is related to skill development, right? PMAY is what? Pradhan Mantri Awas Yojana. These are the name of the policies, right, introduced by the current government, right? So if any student is aware of that, then he or she can tackle the situation or tackle the RC. But if he is not aware, then the author's duty is not to tell you what is it. He can tell you the after effects. He can tell you the drawbacks. He can tell you the cons of it, but he will not tell you what is PMKVY, right? Are you getting my point? So you have to be aware with the various topics. Now, tips to improve your accuracy in reading comprehension. What are the things which you should do? Means abhi to main aapko approach bata raha hu ki how you can improve your reading comprehension part, right? See this. First part and the most important part is reading. Start reading, right? How many of you read newspaper on daily basis, or any kind of stuff in English? Means reading English news, magazines, English novels. How many of you? Tell me in the chat box, how many of you read newspapers on daily basis? English newspaper. Okay, Kurangi. What about others? Kumkum, Keshav. See, this is required. You have to read the stuffs in English. Make it a habit. On daily basis, you have to read the articles in English, right?
and you have to comprehend it, make it a habit, right? अगर नहीं कर रहे थे तो from today start doing it. If you are having magazines like India Today, right, Outlook, or you can say if you are having newspapers, so you can prefer the Indian Express or the Hindu. Editorial section is important. You can read the front page also, right? In that you will get what stuffs in English. Make it a habit and try to find out the gist of the articles, right? Reading is important, right? So you have to be, wait a minute. Wait a minute. I think it's yes. This point was left. Speed and accuracy. Speed and accuracy is also important. Why? Because initially, when you read the instructions of comprehension, what is it written? It is written that read the questions. Read the questions. Read the questions carefully and answer the following questions. But hota kya hai? If you focus on care, means if you focus on accuracy, fully chhoot jata hai. Fully means what? It is related to what? Speed, right? And if you focus on fully means speed, care chhoot jati hai, means accuracy is disturbed. So इन्हीं का combo करने के लिए we have to practice and we have to understand the RCs and key elements, how to solve RCs, right? इसका combo सीखने के लिए, इसका combo सीखने के लिए initially what you require is the care part. Means no matter you are solving any question or you can say solving 2 questions in 10 minutes, it doesn't matter, but those 2 questions should be correct. Means your answer should be correct in those 2 parts, right? Now the next thing is what? Reading. I was telling you the important element to improve your reading comprehension is what? Reading. The second thing is what? Communication. Do you have the environment of speaking English at your home or any other place? Do you have the environment? Do you have the environment of communicating in English? See, we are Indians. Our first language is what? Hindi. So our second language is English. So in most of the cases, you might not get the environment of speaking English at your home, right? So make a group of students, means make a group of people who can communicate with you in English. This is important. Why? Because you have to start thinking in English. Thinking English means what? When you are listening to any statement in English, don't translate it into Hindi. Take it in an English, means in English also, and feel it in English. This will happen when you are in the habit of communicating the things in English, right? Third element was thinking English. Thinking English will be improved what? When you start reading novels. Novels are written in that manner. When you read those things or statements, एक mind में picture बन जाती है, means you visualize, right? Have you heard about literary device imagery, right? Visual imagery. When you read that, your mind creates an environment or a picture of it, right? So if you start reading novels, if you start watching English movies and you are feeling emotional, means if you are crying while watching Hollywood movies, तो सोच लेना कि तुम्हारा ये part improve हो रहा है, right? But don't see the translated versions, right? Enable the subtitles and try to comprehend the situations, right? Now, develop in your personality. See, अगर आप ये 3 above things करते हैं, then this will already be improved, right? Your personality will be drastically changed. ऐसा होगा, right? Next is what? Knowledge of various subjects. मैं आपको बता चुका हूं कि you will be having knowledge of various subjects. You require knowledge on various areas, means आपको philosophy के articles भी पढ़ने होंगे, and you have to read the scientific and technical passages also. You have to read philosophy, you have to read economy based paragraph, you have to read polity also, right? Next is general knowledge. GK will be improved from front page story of newspaper, right? Now
let's see what are the tips to improve RC. Always read the question first. You have to read the questions first. Why? Have a glance over questions first, and while glancing over the questions, always pick what? The keywords of each and every question. See, there are two kinds of question in each category. Suppose if I say, what are the categories of question in RC? So there are broadly two categories. Isko note kar lena sabhi log, right? This is very important. The first one is what? The direct level questions. Direct level questions means what? Which can be answered directly from the given passage. And the second one is what? Indirect. Broadly मैं बता रहा हूँ आपको, in the broader classification, indirect questions and direct questions. Direct questions means what? Which can be answered directly from the passage, means हमें किसी भी तरह की analysis नहीं करनी है, right? Under direct questions, what are the questions which come under this head? The first question is what? Synonyms or antonyms बेस्ड क्वेश्चंस. सिनोनिम और एंटोनिम बेस्ड क्वेश्चंस, ये नोट कर लीजिएगा कि डायरेक्ट में कौन से क्वेश्चंस आते हैं, राइट? सो दैट यू कैन गेट द सेंस कि विच आरसी इज इजी एंड विच आरसी इज अ लिटिल बिट स्टैंडर्ड, राइट? नाउ इफ यू से सिनोनिम्स और एंटोनिम्स बेस्ड ऑन क्वेश्चंस, राइट, here you have to pick the contextual meaning. Which kind of meaning? Contextual meaning, not literal. तो अपने कॉपी में context जरूर लिख लेना. Please write down the context kind of thing. Context means what? Suppose if I tell you a sentence, here you have to tell the synonym or antonym according to the context of the given elements in the sentence, right? In RC, in passage, in paragraph, when they pick a word from the passage and they call it for synonym or antonym, you have to read the whole sentence and you have to comprehend the contextual meaning. Suppose if I pick a sentence or if I write a sentence like this, if any person, suppose Peter said to Sylvia, you are the music of my life, right? You are the music of my life. Now the sentence end. Now the question is asking you, what is the meaning of music as given in the passage? What is the synonym of music? So can you guess? Folks on Zoom, can you guess what is the contextual meaning of music here? Anyone? Suppose if anybody is saying you are the music of my life, तो literal meaning music की क्या होती है? Song or any number, right? But यहाँ पर contextual meaning क्या होगी? Can you guess? Anyone in the chat box? Contextual meaning. What would be the contextual meaning of music word? The word music. Joy. Very good. Enjoyment. No enjoyment. No. Keshav, not enjoyment. Means if you see the sentence, हमेशा ऐसे सोचा करो. Suppose if you are getting any tough word or any easy word, इसको पहले focus मत किया करो. Always focus the other elements in the sentence. If you read this sentence, you are the music of my life. So if you see this sentence, this is what? This is giving you a positive kind of thing. So positive negative में पहले divide कर लिया करो. So if you see this is positive. If anyone is saying that you are music of my life, तो positive है. So what does it mean? It means what? That person is very much important for him. And the second thing is what? In terms of yes, delightness, or you can say in terms of joy, you can say, but enjoyment is not. Enjoyment is what? If you see, enjoyment is very upper level word. Upper level word means what? Not deep, on surface. So you can use joy, love, or very important person. Yes, Kurangi, it could be. Yes. And happiness or positivity. Yes, Ketki, you are right. Right. So suppose you are getting a word which is tough for you, जिसकी meaning आपको नहीं पता है, आप positive negative कर लोगे ना? तो if you the given word, or you can say the other elements are in the positive context, तो आप negative वाले जितने भी options होंगे उनको eliminate कर देना. And similarly, अगर आपका sentence negative होगा, then positive वाले eliminate कर देना. You will get the answer.
So if I say the charm of synonym or antonym questions in RC is this, you can get the contextual meaning from the given sentences in the paragraph, right? Clear hai? So this question will be direct for you. Next is, the next category of question is what? Direct ka likh lena, main yahan pe likh de raha hu, right? The next category is what? Keyword based questions. Now, what do you mean by keyword based questions? Keyword based questions are those questions which are what? Which are related to any specific information given in the paragraph. Keyword is what? Specific information. Write down. Specific information. Specific information given in the passage. आप sentence पढ़ रहे हो, means if you, मैंने कहा ना, always have a glance over questions first. जो जब आप question पढ़ रहे हो, तो there are some questions which are like that. What does the author mean by saying sparrow's nest? And sparrow's nest is highlighted within inverted comma. तो sparrow's nest तो आप passage में ढूंढोगे, and you will get the answer from that area where the sparrow's nest is written, right? So in that context, you have to find the key area, you have to select the keywords, right? Now, next category of question under direct is style or tone based questions. Style or tone based questions. Style or tone based questions means what? Style means what? What is the writing pattern of the author? What is the writing pattern of the author, right? And tone obviously is divided into three parts. One is what? Positive, and the other one is what? Negative, and the third one is what? Neutral, right? So I will take sessions of tones also, okay, and style also. But abhi right now, मैं for instance आपको समझाने के लिए, जैसे मैंने आपको synonym समझाया, in that context I'm going to tell you certain styles, ठीक है? फिर मैं आपसे कुछ questions दूंगा, I will give you certain passages and you have to guess the styles, the writing pattern, right? Start करें? Now see. Let me show you certain styles. मेरा फोन बन गया। See this one. Now see this. The first one is what? Expository. इसको note करिएगा. Or if you have any question related to this, ask me in the chat box. Right? First one is what? Expository. Expository writing style. Write down. In expository writing style, you have to see whether there is fact or figures or not. Means this writing style covers only facts and figures, no author's view. Author's view इसमें इस तरह की writing style में होंगे ही नहीं. There will not be author's view. Author's view होंगे ही नहीं. You will not find any kind of author's view in this kind of writing style. Expository. ठीक है? Expository or factual, right? Means dealing only in facts. For example, expository writing style आपको कहाँ दिखेगी? For example, front page. Write down the example. Front page story of newspaper. Front page story of newspaper. Newspaper के first front page में क्या होता है? Only information. जैसे प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेटेड अ बिल्डिंग, तो इस टाइम पर उन्होंने रिबन काटा एंड दिस एक्सीडेंट ऑफ व्हाट? एक्सीडेंट यस्टरडे ऑन हाईवे देयर अकर्ड एन एक्सीडेंट, राइट? तो उसका कॉज बता दिया एंड टाइम बता दिया, नंबर ऑफ पीपल हु डाइड वो बता दिया. बस पहले आना चाहिए था, देयर शुड बी ट्रैफिक लाइट्स और यू कैन से देयर शुड बी प्रॉपर मेटेलिक रोड्स. ये सब ऑथर अपने व्यू या सजेशंस इस राइटिंग स्टाइल में देगा ही नहीं, राइट? तो इट विल बी व्हाट? एक्सपोजिटरी. तो एक्सपोजिटरी को माइंड में क्या रखना है? एक्सपोजिटरी को आइडेंटिफाई करने के लिए पैसा दे दो काट के. ओके, नाउ एम आई ऑडिबल? आशीष एंड केतकी, म्यूट योरसेल्फ. इट माइट बी पॉसिबल कि आप लोग की तरफ से भी थोड़ा सा कंजेशन आ रहा हो. यस,
Now, am I audible? Am I audible? Say yes or no in the chat box. Okay, okay, good, good. Now I was saying expository writing style को कैसे pick करोगे? It should be what? It should be like facts and figures, no author's view, right? The second example, पहला example तो मैंने दिया कि front page story of newspaper. Newspaper की front page story is very important, right? वहां पर सिर्फ आपको न्यूज दी जाएगी कि एक्सीडेंट अगर हुआ इस टाइम पर इतने लोग मर गए, right? Means dead. Nothing else, right? The second example is what? The second example of expository is what? All scientific and technical passages. All scientific and technical passages. Technical passages, right? All scientific and technical passages. Scientific and technical passages means what? Sometimes you get technical passages that there is a research which is going on in the area in our country, right? And suppose if you are getting technical passages, तो author उसमें अपना कोई भी view नहीं दे सकता. Even he has to mention that typical scientific name, जो कि बहुत अजीब सा होता है. Even you cannot pronounce it, right? ठीक है. So in that kind, if you are getting any kind of technical passage, तो वो भी क्या करोगे? Expository ही लगा देना. ठीक है. And one thing important, always think within the given range of options. जैसे writing styles या tone जब भी आप सोचना ना कि which answer is correct, तो your range should be what? Your range should be 4 options. बहुत broad मत सोचना. Why? Because फिर confusion हो सकता है. Because there are n number of tones, there are n number of styles. But if you think within the given range of options, तो clear cut differences आपके mind में आ जाएंगे, right? Now, expository पहचान लोगे. Fact and figures, no author's view. Clear? Now, the second one is argumentative. Argumentative is what? One-sided debate. Author one-sided ही बोलता चला जा रहा है, right? This is not good for society. This is wrong. ठीक है, तो that is what? Argumentative. Descriptive. Descriptive means what? Descriptive means describing anything in a great detail. ठीक है, इसमें कुछ points add करना चाह रहा हूं मैं. Describing anything in a great detail. Write down using fancy or ornamental words. Using fancy or ornamental words. ये जरूर लिख लेना. Fancy and ornamental words. एक तो आपने क्या देखा? Describing anything in a great detail. You are having minute details about anything. The second thing is what? Using fancy or ornamental words. Fancy or ornamental words का मतलब क्या होता है? What does it mean? Fancy और ornamental words का मतलब ये होता है कि आपने किसी एक वर्ड को जो कि किसी और एरिया में यूज होता है उसको उसके प्लेस से उठाकर किसी दूसरे कंटेक्स्ट में यूज कर दिया, राइट? Suppose if any person says that you are an you are an unmendable tear of my life. Now what? Where is the fancy word? Fancy word किस word को बोल रहे हैं? Fancy word कौन सा word हुआ? Yes, unmendable tear, unmendable tear, both words are fancy. These words are what? Fancy words. How? Tear means क्या होता है? Tear का literal meaning क्या होता है? आंसू, right? When somebody cries, tears निकलते हैं, right? यहाँ पर क्या दिया हुआ? यहाँ पर contextual meaning को focus कर रहा है, means उस tear word को, रोने वाले word को यहाँ पर use कर रहा है, right? To express his feelings. ठीक है? उसने कहा you are an unmendable tear of my life. Means what? आप ऐसे आंसू हो जो कभी मैं पूछ नहीं सकता, right? Means what? You are tragedy of my life, or you can say the speaker is what? Is not happy with the other person, right? So we can get the sense, but when we see these kind of words, जैसे आप poetry पढ़ते हो, poetry, have you read the poetry? Poetry में author कभी-कभी like have you read the stories or poetry or prose of Robert Frost? Robert Frost हमेशा natural elements लेता है अपनी writing में, right? तो रॉबर्ट फ्रोस्ट क्या करता है
कि इफ ही डिस्क्राइब्स ट्री तो ही विल डिस्क्राइब ट्री एज एन एक्ट्रेस। आपने ऐसे वर्ड्स देखे होंगे कि वो या तो एक्ट्रेस ही लग रहा होगा, राइट? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू पिक द ऑर्नामेंटल वर्ड्स। जैसे डिस्क्रिप्टिव राइटिंग स्टाइल के लिए अपने माइंड में क्या रखोगे? यू हैव टू पिक एनीथिंग इन अ ग्रेट डिटेल। जैसे आप देखो कि एक पॉइंट पर स्टोरी अटक गई, मींस व्हाट? व्हेन यू सी वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ किंग, ठीक है, एंड ही यूजेस अ स्ट्रेंज बैग। नाउ ये तो लग रहा था नैरेटिव होगा, मींस कोई स्टोरी चल रही है, बट अचानक से बैग को डिस्क्राइब करते हुए उसने 4 लाइंस क्या 5 लाइंस क्या पूरा पैराग्राफ एंड कर दिया। मींस describing the bag was black in color, it was strange, or you can say the appearance of the bag was strange, ठीक है, ये डिस्क्राइब करते हुए पैराग्राफ एंड हो गया। देन व्हाट डज इट मीन? इट मींस इट इज डिस्क्रिप्टिव, जहां पर स्टोरी एक पॉइंट पर रुक जाए, दैट इज व्हाट डिस्क्रिप्टिव। द सेकेंड एलिमेंट जो मैं अपना सबसे ज्यादा की फैक्टर समझता हूं, दैट इज व्हाट ऑर्नामेंटल वर्ड्स। आप जब भी देखो किसी भी सेंटेंस में ऑर्नामेंटल वर्ड्स, जैसे पोएट्री में हमेशा ऑर्नामेंटल वर्ड्स होते हैं, इसलिए डिस्क्रिप्टिव राइटिंग स्टाइल होती है, राइट? ठीक है, ऑर्नामेंटल वर्ड्स जहां भी देखो आप, ऑलवेज थिंक अबाउट डिस्क्रिप्टिव राइटिंग स्टाइल। इज इट क्लियर? नाउ पहचान लोगे? ये अपने माइंड में सोच रहे हो पहचान लोगे कि नहीं, क्योंकि अभी चेक होगा ये। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, द नेक्स्ट स्टाइल इज persuasive. Next style is what? Persuasive. Persuasive means what? Author tries to convince the readers according to his own thought. See, the author will give you an idea first. पहले वो अपना एक आइडिया दे देगा author, ठीक है, कह देगा struggle is the part of life, और you can say man is mortal, इस तरह के जनरल थॉट्स, एक जनरल आइडिया या जेनरिक आइडिया दे देगा, राइट? नाउ व्हाट डज ही डू? He tries to convince you according to his own thought, right? According to his own thought. वो ऐसे ऐसे पॉइंट्स दे देगा that you will be convinced enough at the end portion of the paragraph. See, suppose if I talk about persuasive, तो persuasive is what? To convince anyone according to the your own thought, according to your own selfish end. देखो, there are two things. एक वर्ड होता है convince. Convince means what? किसी को समझाना। तो जैसे मान लीजिए आप रास्ते में जा रहे हैं and two persons are fighting, you don't know them, ठीक है, फिर भी आपने अपनी गाड़ी रोकी and you said that life is very small, enjoy it, don't fight, right? और आपने उन दोनों को अलग कर दिया और झगड़ा खत्म कर दिया। This is what convince means, in general किसी को समझाना। But persuade is a different kind of thing. You convince someone according to your own selfish end, according to your own thought. अब आप किसी को समझाओ लेकिन अपने according. Suppose if I take the example of media, media is what? Persuasive. Media is what? It is परसुएसिव। मीडिया जब किसी लीडर को फेमस करना चाहती है तो दूसरी तरह के न्यूज फ्लैश करने लगती है, राइट? सपोज इफ यू टेक द केस ऑफ व्हाट एनी पॉलिटिकल लीडर, इफ दे वांट टू प्रेज हिम, दे विल शो द फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय दैट गवर्नमेंट, राइट? इफ यू टेक द केस ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट शोज व्हाट? जैसे ही केजरीवाल मींस एट द टाइम ऑफ इलेक्शंस क्या हुआ था? फ्री इलेक्ट्रिसिटी, मोहल्ला clinic, 10,000 buses, all those facilities were flashed by the media. As a result, party won the election, right? This is what? Persuasive. ठीक है? If you read, इसके example में लिख लेना editorial section of newspaper. Which section? Editorial section. Editorial section of newspaper. It is persuasive. Editorial section of newspaper, right? Editorial section of newspaper, this is the example. Now, so author will give you an idea first, then he will try to convince you with his own thought, with the help of examples and justifications. मैंने मान लो कोई भी ऐसे कहा, मैंने कहा कि life is hard for everyone, तो हो सकता है कई लोग एग्री नहीं करें मेरे इस थॉट से, but the thing is when I start giving examples, see the life of Peter, he woke up at he wakes up at 4 a.m. and he returned to his home at 10 p.m. See the life, every day he is striving hard, one day he met with an accident. ये सब क्या है? What is this? This is a specific example of Peter to prove the generic idea that life is tough for everyone, right? Again, कुछ expert comments दे देंगे, जो फेमस पर्सनालिटीज हैं उनके कोट्स को या उनके स्टेटमेंट्स को इन्वर्टेड कॉमा से हाईलाइट कर देंगे इन ऑर्डर टू जस्टिफाई माय थिंकिंग, राइट? तो दिस इज कॉल्ड परसुएसिव। पहचान लोगे, राइट? नाउ
The next thing is, the next writing style is narrative. Narrative means any story, event or incident. Story means what? मैंने कहा once upon a time there lived a boy in a small town. One day he went to the market. Means story. Event. Suppose किसी कॉलेज फंक्शन का इवेंट डिस्क्राइब हो रहा है, and from the starting point the author is discussing the whole event step by step, right? Chief guest was this, at 7 p.m. he arrived, ठीक है, all the colleagues or you can say all the students were welcoming him, ठीक है, then he thought, then he gave a speech. इस तरह से means event step by step story या event आगे बढ़ता जाएगा. Incident, suppose it describes an incident of accident, right? An accident occurred on highway, ठीक है, तो a car was moving fast, ठीक है, suddenly a truck came. Means step by step. This is what story, event or incident. This is known as what? Narrative. अब most of the students are confused between what? Narrative and descriptive. तो मैं आपको डिफरेंस बता दूं. In descriptive स्टोरी एक पॉइंट पर जाकर रुक जाएगी. वैसे दोनों की स्टार्टिंग एक जैसी हो सकती है. जैसे मान लो मैंने बोला on Sunday morning I woke up at 9, right? I saw a strange tree from my window. इतना तो कंफ्यूज कर रहा है ना कि डिस्क्रिप्टिव है या नैरेटिव, बिकॉज शुरू में तो आप प्लॉट दोगे ही, आइडिया दोगे ही, ठीक है. फिर मैंने कहा स्ट्रेंज ट्री. अब नाउ आई एम डिस्क्राइबिंग द स्ट्रेंज ट्री एंड द पैराग्राफ एंड्स. तो ये क्या हुआ? डिस्क्रिप्टिव. बट मैंने उसको डिस्क्राइब तो किया 2 लाइंस में, बट आगे मतलब बिफोर एंडिंग द पैसेज सडनली आई चेंज द सिनेरियो. Suddenly my mother came into my room and she asked me for the breakfast. This is what? Narrative. जहां पर स्टोरी आगे बढ़ती चली जाएगी, that is narrative. जहां पर एक पॉइंट पर रुक जाएगी, that is descriptive. Descriptive का मैंने एक और एलिमेंट आपसे बताया है which is very important, जो बिल्कुल ही आपको नैरेटिव से अलग कर देगा. That is what? That is fancy words, fancy or ornamental words, right? Now can you pick these writing styles in the given passages? अभी मैं जो आपको पैसेज शो करूंगा, can you try? Are you ready? Any confusion in these writing styles? किसी भी writing styles को जितनी भी स्क्रीन पर हैं, any confusion? Okay, shall I proceed? Now see this passage and you have to identify the writing style. Your options are expository, narrative, descriptive and persuasive. Think within the range of given options. This is the passage. Just read it and guess. Yes, Keshav. Shall I move to the back slide? Keshav? Any confusion? Write down. Okay, no doubt, sir. Okay. Now read this paragraph and pick the style. ठीक है, स्टाइल को चैट बॉक्स में लिख देना. राइट, रीड दिस पैसेज. ओके, यस, केतकी. Okay, Ketki has given descriptive. Gauri is saying descriptive. Okay, what about others? Two of you are saying descriptive. Okay, any other answer apart from descriptive? No. Okay, see, very good, the answer is absolutely correct, Ketki and Gauri. Yes, Kumkum, descriptive is the right answer. How you came to know that this passage is descriptive? Can you tell me the reason? What is the reason behind understanding the style? Very good answer. Ornamental words are the biggest reason. See this. The lights grow brighter as the earth lurches away. अब यहाँ पर डिस्क्राइब क्या कर रहा है? जैसे आपने सेंटेंस पढ़ा, ठीक है, स्टार्टिंग सेंटेंस पढ़ा, तो आपने देखा कि the author has used what? Earth. The lights grow brighter as the earth lurches away from the sun. एक नेचुरल सीन डिस्क्राइब हो रहा है, सन, अर्थ, नेचुरल एलिमेंट्स लिए हुए हैं उसमें. And now the orchestra is playing. Now
ऑर्केस्ट्रा वर्ड क्या नेचुरल या सीनिक ब्यूटी को डिस्क्राइब करने के लिए आना चाहिए? ऑर्केस्ट्रा वर्ड तो म्यूजिक इंडस्ट्री का है ना, आपने वहां से उठाकर इसको सीन को या सीनरी को डिस्क्राइब करने के लिए लगा दिया, राइट? दिस इज नोन एज व्हाट? फैंसी वर्ड्स. ऑर्केस्ट्रा इज प्लेइंग येलो कॉकटेल म्यूजिक. अब कॉकटेल यहां का है नहीं. कॉकटेल इज यूज्ड फॉर व्हाट? इन विच एरिया? व्हेन यू मिक्स अप टू ड्रिंक्स. व्हेन यू मिक्स अप टू ड्रिंक्स उसको कॉकटेल बोलते हैं. अब आपने कॉकटेल वर्ड वहां से उठाकर, उस एरिया से उठाकर आपने कहां पर सीनिक ब्यूटी को डिस्क्राइब करने के लिए लगा दिया. Cocktail music is also ornamental, and the opera of voices is also again what? Ornamental words. So the whole thing is what? The whole thing is what? Describing what? Yes, describing the room. आप जिसे अगर आप पढ़ो तो आगे अगर room भी है तो if you are using room, or you can say if you see these things, तो क्या ये इस एरिया के हैं जहां पे यूज होना चाहिए? नो, दीज आर व्हाट? दीज आर द वर्ड्स फ्रॉम द म्यूजिकल एरिया, और आप यूज कहां कर रहे हो? दूसरे एरिया में. तो दिस इज व्हाट? दिस इज डिस्क्रिप्टिव, राइट? सो द करेक्ट आंसर इज व्हाट? डिस्क्रिप्टिव. क्लियर? एनी डाउट? दूसरा क्या एलिमेंट है? स्टोरी आगे नहीं बढ़ रही है. जरा देखो यहां पर, कहीं स्टोरी आगे बढ़ रही है? कोई स्टेप बाय स्टेप आगे चीजें बढ़ रही है? नो, एक पॉइंट पर रुक गया, अटक गया, राइट? डिस्क्रिप्शन इज देयर ओनली, राइट? Now let's see second one. Very good. Now see the second one. Options are same: expository, narrative, descriptive, and persuasive. Tell me. Ketki is saying narrative, Gauri is saying narrative. Okay. How it is narrative? How it is narrative? Use of I is narrative. मैंने कहा ना कि I से तो descriptive भी हो सकता है, but the thing is, yes, Gauri, very good answer. Story progresses step by step. Right? It is मतलब it proceeds on. आप देखो जैसे I तो यूज किया है, बट I यूज करके उसने क्या किया? इवेंट को आगे बढ़ाता चला गया. See this. I entered the race. फिर उसके बाद क्या हुआ? If you focus, I went. ठीक है, मतलब एंड मोमेंट तक क्या है? स्टोरी आगे बढ़ते चले जा रही है. आई एम थिंकिंग दैट मींस व्हाट? आई करके इवेंट्स आगे बढ़ते चले जा रहे हैं. इवेंट्स आर व्हाट? Moving on, right? So it is what? Absolutely correct. Narrative. It is narrative. See the next one. The next one is this one. Options are there in your screen: expository, narrative, descriptive, and persuasive. Okay, expository. Any other answer? Very good answer, Ketki and Gauri. Expository is the right answer. Why expository? Because it is a technical passage. आप पहले ही पढ़ोगे अगर तो it is saying all toilet flush tanks work about the same. When the toilet is flushed, the trip handle lifts the tank wall, opening the outlet and letting water flow into the bowl. When the tank means actually this passage is talking about what? How the toilet flush tank works. उसकी working procedure को बता रहा है step by step. No author's view, technical passage, expository. Very good answer, right? तो जितने भी scientific और technical passage होंगे, those will be what? Those will be expository. Now the fourth one. Fourth one. Immigration contributes to the overall health of American economy. Yes, very good, Ketki, Gauri. Persuasive. Persuasive में एक चीज आप लोगों को बताना होगा. What is the generic thought? जैसे author, मैंने कहा ना, author gives his idea first, then he tries to justify that idea through examples and justification. So what is the idea? Can you tell me what is the idea? Author क्या prove करना चाह रहा है इसमें? Advantages of immigration. Yes,
The first line is what? The main idea of the passage. Immigration contributes. What is the meaning of immigration? Can you tell me? Immigration means what? Immigration means what? Immigration means, see, have you heard this word migrate? Migrate means what? Migrate means what? Moving from one place to another, right? Moving from one place to another, right? इसी से two words निकले हैं. Means one is immigrant and the second one is what? Emigrant, right? Spelling पर focus करना. One is E and other is I, right? तो इसको ऐसे to remove the confusion, कई students इसमें confuse हो जाते हैं. Immigrant means what? I for in, E for exit, ऐसे याद रखना. जो अपने native place को छोड़कर चला जाता है, right? Suppose if a person is from India, he is getting settled in US, right? In terms of job, in terms of marriage, वहीं पर जाकर job करने लगा, settle भी हो गया, marriage भी कर ली, तो he is emigrant for India. यहां से तो वो चला गया ना, exit हो गया. अमेरिका में जब गया तो अमेरिका के लिए वो क्या हो गया? इन हो गया. तो क्या हो गया? इमिग्रेंट हो गया. Clear? Is it clear? Right? So the passage is trying to say that immigration means what? People from outside America, मतलब people from Japan, people from India, means various countries. ठीक है? Immigration contributes to the overall health of the American economy. तो American economy is what? Improving with the help of what? Immigration. Immigration means हर जगह की creamy layer अमेरिका में आके अगर वर्क करने लगेगी, जापान के एक्सपर्ट्स आ गए, इंडियन के एक्सपर्ट्स आ गए, तो ऑब्वियसली उनकी इकोनॉमी क्या होगी? इंप्रूव होगी. एंड इन द रेस्ट पार्ट ऑफ द पैसेज ही इज ट्राइंग टू जस्टिफाई दिस पॉइंट, राइट, कि हाउ इमिग्रेशन हेल्प्स अमेरिकन इकोनॉमी. क्लियर? इज इट क्लियर? नाउ अब एक पैसेज करते हैं, राइट? स्टाइल पिक कर लिया. ये 4, जैसे और भी राइटिंग स्टाइल्स आपको मैं बताऊंगा, बट ये जो मैंने 4 to 5 स्टाइल्स डिस्कस की हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इन टर्म्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन? Is there any confusion in 4 या 5 styles में? Persuasive is very important. Persuasive maximum passages में persuasive आता है, right? ठीक है. Now let's see one passage. अब एक passage करते हैं. I will show you the questions first, right? जैसे मान लीजिए ये तो passage है. मैंने क्या बोला? Always have a glance over questions first. तो सबसे पहले questions देखते हैं. See, ये इसको एक मेथड बना लेना, और जब भी आपको पेपर मिले, ठीक है, हाईलाइट द कीवर्ड्स फ्रॉम द क्वेश्चंस, ठीक है, और इसमें आपको मैक्सिमम 15 सेकंड्स लगने चाहिए. कितने सेकंड्स? 15. अभी तो आपको टाइम लगेगा बिकॉज यू आर लर्निंग, बट जब आप इसको सीख जाओगे तो ये करने में, कीवर्ड्स को हाईलाइट करने में 15 सेकंड से ज्यादा नहीं लगना चाहिए, राइट? ठीक है, लेट्स सी. मैंने देखा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन ऑर्डिनरी मेगलोमेनियक एंड मेगलोमेनिक लाइक अलेक्जेंडर द ग्रेट. कीवर्ड इज व्हाट? अलेक्जेंडर द ग्रेट, राइट? ये तो हुआ. ठीक है, तो काइंडली एनसर्कल द कीवर्ड्स, राइट? तो मैंने फर्स्ट में क्या कर लिया? मैंने अलेक्जेंडर और मेगलोमेनियक का डिफरेंस पूछा, उसको मैंने अंडरलाइन कर लिया, मींस एनसर्कल कर लिया. सेकंड क्वेश्चन, हाउ डज अ मेगलोमेनियक डिफर फ्रॉम अ नार्सिसिस्ट? तो नार्सिसिस्ट से इसकी डिफरेंस पूछ रहा है, राइट? सी थर्ड वन, इन वेयर दिस अकर्स. अगर किसी सेंटेंस में, किसी क्वेश्चन में इन्वर्टेड कॉमा में आपको क्वेश्चन पोर्ट्रे करता है तो इट इज 100% डायरेक्ट क्वेश्चन. और इसमें किसका पूछा है रेफरेंस? This का, means this statement is important. Where this occurs, it makes a man. If not both, this refers to. This refers to. This is the keyword, right? ठीक है, तो you have to retain these keywords in your mind while reading the passage. इतना कर सकते हो कि थोड़ी देर के लिए आप इन words को, keywords को retain कर लो अपने mind में, so that when you are reading the passage, जैसे ही ये words आए, mind में तुरंत क्लिक करे और आप उसको, उस portion को underline कर लो. ठीक है, आंसर वहीं से मिलेगा, राइट? मान लो आप, कई स्टूडेंट करते हैं कि सर आई फॉरगेट द एलिमेंट्स रिटन इन द पैसेज. हाँ, तो आप एक बार रिविजिट करोगे तो आपने अंडरलाइन तो किया ही है, तुरंत देखते ही आंसर मिल जाएगा. रिविजिट करना ठीक है, रीरीड करना गड़बड़ हो जाएगा, इट विल वेस्ट योर टाइम, राइट? राइट, तो क्या करना? पहले आपने अंडरलाइन कर लिया. नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट? व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज देयर रीजन फॉर अनहैप्पीनेस? ये तो इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन लग रहा है, राइट? बिकॉज जो क्वेश्चन ब्रॉड वर्ड्स को लेगा, ठीक है, तो ब्रॉड वर्ड्स आर रिलेटेड टू व्हाट? इन्फ्रेंस. ठीक है, नाउ
फिफ्थ वन इज व्हाई हैज लव ऑफ पावर टू बी एक्सेप्टेड? नो, यहाँ का कीवर्ड क्या होगा फिफ्थ क्वेश्चन का? इट शुड बी लव ऑफ पावर. लव ऑफ पावर इज द कीवर्ड. ठीक है, अब हम पैसेज रीड करते हैं. नाउ आई विल शो यू द पैसेज. ठीक है, रीड दिस पैसेज. एक बार आप रीड करो, देन आई विल डिस्कस दिस पैसेज. ठीक है, जल्दी से रीड कर लो. इफ यू डोंट नो द मीनिंग और इफ यू आर अनेबल टू नो द मीनिंग ऑफ एनी वर्ड, तुरंत चैट बॉक्स में लिखो, मैं उसकी मीनिंग बता दूंगा. बट ट्राई टू गेट द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस पैसेज. Those who are done with the reading part, give me a thumbs up. Done with the reading part? Okay, now let's see. See, it is written, the megalomaniac differs from the narcissist by the fact that he wishes to be powerful rather than charming. Means the passage is talking about the mentality of megalomaniacs in terms of narcissists, right? Megalomaniacs want what? They love to be powerful rather than charming. Means वो dominate करना चाहते हैं society को. They don't want to be loved from the society. वो society से love नहीं चाहते हैं. वो चाहते हैं dominate करें society को. जैसे हिटलर था, he wanted to dominate the society, right? तो उनके अंदर megalomaniacs के अंदर क्या था? Powerful होने की wish थी, desire थी, right? Now, and seeks to be feared rather than loved. क्या लिखा हुआ है? Rather than loved. ठीक? To this type belong many lunatics. इस टाइप में, इस कैटेगरी में जो कि पावरफुल होने की डिजायर रखते हैं, many lunatics and most of the great men in history. तो कई lunatics भी आते हैं इसी कैटेगरी में, और great men in history, आपने देखा होगा हिस्ट्री में कई ऐसे पर्संस हैं जो कि डोमिनेंट या पावरफुल ही होना चाहते थे, राइट? ठीक है, वो क्या करते थे, किसी रीजन से कहते थे कि भाई मैं अपने अंडर में इस रीजन को लेना चाहता हूं, नहीं लेते थे तो वॉर कर लेते थे, डोमिनेट ही तो करना हुआ, राइट? नाउ love of power like vanity. So if you have focused the keywords in the question, love of power was the keyword. तो इसको तुरंत underline कर लेना because question है इससे related, right? Love of power like vanity is a strong element in normal human nature. तो what you have to do is जो भी आपको keyword based element दिखे पैसेज में उसको underline जरूर करना, right? ठीक है, तो love of power like vanity is a strong element in normal human nature. तो क्या कह रहा है ऑथर कि having the wish of powerful means love of power एक बहुत ही नॉर्मल नेचर है. क्या नॉर्मल एलिमेंट है, नॉर्मल ह्यूमन नेचर है. हर एक पर्सन पावरफुल होना चाहता है. आप सोचिए ना कि कौन पावरफुल नहीं होना चाहता है? सब लोग पावरफुल बनना चाहते हैं, राइट? तो इट्स वेरी नॉर्मल इन ह्यूमन नेचर एंड एज सच इज टू बी एक्सेप्टेड इट बिकम्स डिप्लोरेबल. डिप्लोरेबल मींस व्हाट? बैड. ये बुरा कब बन जाता है? ओनली व्हेन इट इज एक्सेसिव. जब इसका, जैसे जब आपके अंदर पावरफुल होने की डिजायर है, जब ये एक्सेस फॉर्म ले ले, तो एक्सेस तो किसी भी चीज का अच्छा नहीं होता है, राइट? तो इट बिकम्स डिप्लोरेबल मींस बैड ओनली व्हेन इट इज एक्सेसिव और एसोसिएटेड विद एन इनसफिशिएंट सेंस ऑफ रियलिटी, राइट? तो इट बिकम्स व्हाट? डिप्लोरेबल ओनली व्हेन इट इज एक्सेसिव. ठीक है, वेयर दिस अकर्स. अब ये लाइन इफ यू रिमेंबर ये भी कीवर्ड का पार्ट था, तो दिस वाज व्हाट? योर कीवर्ड. इस दिस के रेफरेंस को बताना होगा क्वेश्चन में, ठीक है, आंसर में. वेयर दिस अकर्स, तो दिस इज व्हाट?
love of power या excessive love of power? Where this occurs? Excessive love of power. It makes a man unhappy or foolish. Means जहां पर ये excessive love की desire आ जाती है तो एक person को या तो वो दुखी कर देती है unhappy और foolish, या तो idiot बना देती है foolish, या तो दोनों ही बना देती है. Now the lunatic who thinks he is crowned head may be in a sense happy, but his happiness is not of a kind that any sane person would envy. Means जो ल्यूनेटिक्स हैं, जो कि पावरफुल रहना चाहते हैं, वो आपको इन टर्म्स या एट द सरफेस हैप्पी लग सकते हैं, बट एक्चुअली दे आर नॉट हैप्पी. कह रहा ना कि उनसे कोई समझदार पर्सन जेलस हो, ऐसा नहीं है. ठीक है, उनकी हैप्पीनेस इस तरह की नहीं होती है. नाउ तो दिस राइटिंग स्टाइल बता सकते हैं इसकी क्या है? द राइटिंग स्टाइल ऑफ दिस पैसेज इज व्हाट? परसुएसिव. ठीक है, देखो जस्टिफाई कर रहा है तो ही इज गोइंग टू गिव यू एग्जांपल ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट, राइट? ठीक है, अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए पावरफुल या डिजायर ऑफ पावरफुल इज हार्मफुल या नॉट गुड, वुड जस्टिफाई करने के लिए अलेक्जेंडर द ग्रेट का एग्जांपल भी दे रहा है. अलेक्जेंडर द ग्रेट वाज साइकोलॉजिकली ऑफ द सेम टाइप एज ल्यूनेटिक. तो वो ल्यूनेटिक की तरह ही था, ल्यूनेटिक की मेंटालिटी की तरह ही था अलेक्जेंडर द ग्रेट, दो ही possessed द टैलेंट टू अचीव द ल्यूनेटिक्स ड्रीम. लेकिन उसमें और ल्यूनेटिक नॉर्मल ल्यूनेटिक्स में डिफरेंस क्या था? ही वाज द अचीवर, ही वाज द अचीवर. और बाकी लोग ड्रीम ही करते रह गए. तो मतलब जो लोग ड्रीम देख रहे हैं वो अलग हो गए, और जिसने उस ड्रीम को फुलफिल कर लिया, प्रैक्टिकली, है ना, विन कर लिया, तो क्या है? दैट इज द अचीवर. ठीक है, दैट वाज द डिफरेंस. ही कुड नॉट हाउएवर अचीव हिज ओन ड्रीम. नाउ ऑथर इज सेइंग कि अलेक्जेंडर वाज not able to achieve his own dream, which enlarged his scope as his achievement grew. When it became clear that he was the greatest conqueror, conqueror means what? जिसके अंदर में बहुत सी चीज रीजन्स आ जाए, known to fame, he decided that he was a god. अब इसे कोई यही सोच ले कि he was a god, तो क्या होगा? It is extreme and it is not good for human beings. We cannot become god, right? God means what? Have you heard this proverb that to err is human? Human है तो error है, राइट? और आप अगर 100% करेक्ट हैं तो आप भगवान हैं, तो यू आर नॉट गॉड, राइट? तो क्या है? दैट ही वाज अ गॉड. अब लेकिन वो सोचने लगा व्हेन ही वाज बिगेस्ट कॉन्करर, तो वो सोचने लगा कि वही भगवान है, राइट? वाज ही हैप्पी मैन? ऑथर इज सेइंग, क्या वो रियल में हैप्पी था? हिज ड्रंकननेस डू यू नो, टेकिंग लॉट्स ऑफ अल्कोहलिक ड्रिंक्स, हिज फ्यूरियस रेजेस, बहुत ज्यादा गुस्सा करना, हिज इंडिफरेंस टुवर्ड्स वुमेन. इंडिफरेंस मींस व्हाट? बीइंग न्यूट्रल. ठीक है, जैसे कहते हैं ना, ही इज इंडिफरेंट टू प्लेजर एंड पेन्स. तो विमेन को भी वो उसी तरह ट्रीट करता था जिस तरह से मेन को करता था. और पहले की पनिशमेंट्स बहुत हार्श होती हैं, इफ यू नो, एग्जीक्यूशन वाज देयर. एंड हिज क्लेम टू डिविनिटी, क्लेम टू डिविनिटी मींस व्हाट? मैं ही भगवान हूं. तो ये सारी बुरी आदतें क्या शो कर रही थी? सजेस्ट दैट ही वाज नॉट एक्चुअली हैप्पी, राइट? देयर इज नो, अब जैसे ये सारे क्या है? ये सारे स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स हैं. दिस इज व्हाट? दिस इज जेनरिक स्टेटमेंट. देयर इज नो अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन इन द कल्टीवेशन ऑफ वन ह्यूमन एलिमेंट ऑफ ह्यूमन नेचर एट द एक्सपेंस ऑफ ऑल द अदर्स. तो ऑथर कहना चाह रहा है कि कोई भी पर्सन कभी भी सेटिस्फाई नहीं रह सकता वो जब वो अपने वन डिजायर को फुलफिल करने के लिए बाकी डिजायर्स को क्या करे? सेक्रीफाइस कर दे, राइट? नॉर इन व्यूइंग ऑल द वर्ल्ड एज अ रॉ मटेरियल फॉर द मैग्निफिसेंस ऑफ वंस ओन ईगो. अब ऐसा भी नहीं कि आप पूरे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को रॉ मटेरियल समझने लगो. ठीक है, नाउ दिस इज द पैसेज. क्लियर? नाउ सी द क्वेश्चंस. Quickly. See this. The first one is, what is the difference between an ordinary megalomaniac and megalomaniac like Alexander the Great? The correct answer is what? The correct answer is B. The correct answer is B. See, the correct answer is what? The correct answer is B. The ordinary megalomaniac does not have the talent to realize his wish, which the Alexander Great the had. Realize मतलब क्या हो गया? अचीवर था ना वो. बाकी सारे ऑप्शंस रॉन्ग है. इफ यू सी, अलेक्जेंडर द ग्रेट वाज ग्रेट, ये तो कोई ऑप्शन ही नहीं हुआ, राइट? ठीक है, ल्यूनेटिक की तरह ही था वो, तो ये भी नहीं कह सकते ही वाज नॉट एज अ ल्यूनेटिक, राइट? तो सर करेक्ट आंसर इज व्हाट? बी. सेकंड, हाउ डज अ मेgalomaniac डिफर फ्रॉम नार्सिसिस्ट? डी इज द राइट आंसर. बाय विशिंग टू बी पावरफुल एंड फियर्ड. ठीक है, वो पावरफुल रहना चाहता था और फियर. इन वेयर दिस अकर्स, इट मेक्स अ मैन unhappy, or if not both, just this refers to what? Excessive love of power, not love of power. Excessive love of power should be there, right? Okay, now see the next one. Number 4. Fourth question is what? Which among the following is the reason for unhappiness? Now what? ये
इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन था। तो क्या अब वो लिखा ना, देयर इज नो अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन इन सेटिस्फाइंग द ओनली वन एलिमेंट इन ह्यूमन नेचर। तो क्या है, दिस वन इज व्हाट, दिस वन इज द करेक्ट आंसर, सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। नाउ सी नंबर 5, व्हाई हैज लव ऑफ पावर टू बी एक्सेप्टेड। इसका आंसर क्या लिखेंगे आप लोग, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, टेल मी। I will show you the line. If you see, if you focus the line, see this. Love of power, like vanity, is a strong element in normal human nature. ठीक है, तो vanity वाला पॉइंट कभी भी आंसर नहीं होगा. Why? Because it is written with the word like. Like means similar, not same. Like means similar. जैसे मान लो मैंने कहा bring vegetables from the market like potatoes, तो potatoes लाना है, नहीं लाना है, potatoes जैसे vegetables आएंगे, but जब as लिखा होता then it would be same. तो क्या होगा, love of power like vanity is a strong element in normal human nature. तो normal human nature वाला option would be the correct answer. See the options. See, so the correct answer would be what? Not the vanity one. It should be option C, because it is a part of human nature, right? Clear? So in this way you can tackle so many passages. In the next part I will discuss certain passages, right? Okay, with direct and inference based questions. Till then, thank you so much. Bye bye.